felt I knew क्या हम्म होने वाला है, but then उसके दिमाग पे बस गया था ना कि oh हम्म fuck, I have to go through this like for another. They are stretching it just so that they can make an impact. sort of empty space in between the major event, वो मेरे को लग अरे रहा था सप्त सागर पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तेरे हिसाब से कौन सा वाला तेरे को ज्यादा क्या बोलते हैं, रिलेट रिलेट नहीं बट देन मेमोरेबल जो था? yeah, बी obviously था। B was my type of movie. हाँ, Like तो अपन ये डिस्कस करते व्हाई A didn't resonate that work. much with you and B did, while A being more Okay, I have a realistic. borrowed opinion, ठीक है. I thought about it like बाद में, and I Hmm. realized, yep, that's true. Part A was very indulgent, don't you feel? Like it could have been easily done away, like could Could have have been been easily squeezed done away smaller. हाँ. in a first half. Yep. So after a while, it just felt like they're stretching it just so that they can make an impact Hmm. for side B. Part 2. True. I mean, I didn't hate it wholly. I loved it. I Hmm. like it had some moments like when she gives up and the way Hmm. it is shown, like पूरा पीछे भी पूरा पेड़ पे पत्ते नहीं होते हैं, Hmm. वो खुश नहीं रहती है, एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट. लाइक वो आंटी को वो सीट देना बंद कर देती है, Hmm. वो शीरा गिर जाता है. Yep. That whole sequence is really beautiful and it could have been easily done away with 45 minutes. Like क्या हो जाता था. मेरा इश्यू था इससे ये से कि it had a definitive path कि he'll borrow money in the pretext कि he'll go to jail for certain years and everything, which isn't very new, and even the No, director but knows wait, it. I think sorry for हाँ interrupting, बोल। but इस पे डिफर करना चाहूंगा कि सबवर्ट किया. लाइक किस वॉट तरह? एवर आई वाज थिंकिंग ना, मूवी हम्म जब से स्टार्ट हुआ मूवी, हाँ एंड लाइक वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है ना, लाइक ही हम्म हैज टू गो टू जेल, हम्म वहां से आई फेल्ट आई न्यू हम्म क्या होने वाला है, बट देन उसने डिले किया उसको. नहीं लगा तेरे को like, जैसे ही वो जेल में गया, हम्म अपने को लगा he ये gives them a होने वाला hope है, ये कि पता था. हाँ ठीक कर हाँ सकते हैं सब। हाँ, बट देन वो डिले किया, लाइक थोड़ा होप देता है, हाँ ये अच्छा आदमी है रे, वो हम्म डैम सबवर्ट कर रहा है, बट देन अचानक से इट गोज बैक टू दैट सेम रूटीन ओ विच वी फेल्ट वी न्यू करके. होली सबवर्ट नहीं किया, बट देन हिट हेल्ड समझा। यू. वैसे ही मैं कुछ नया दिखाऊंगा एंड देन खींच लिया तो शो इट किया, हाँ ये हाँ तो वही वही है। वही वही वही. इज दैट अ एंड गुड इवन थिंग दैट और अ बैड फोन थिंग? कॉल सीक्वेंस, आई मीन फॉर मी अच्छा ही लगा, मतलब इतना. फोन कॉल सीक्वेंस कौन सा हो जब भी पूरे छोटा भाई उठाता है वो वाला? दैट वाज हार्ट आई ब्रेकिंग नहीं, बट हार्ट टगिंग आई था काफी, लास्ट, मतलब. हाँ वो तो था, प्रॉपर बोल रहा है। लास्ट का जो 15 मिनट्स था वेर इट इज हम्म. रिवील्ड कि थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर हिम, फॉर एंड बोथ द दैट पीपल। रेज ही शोज, उसका कान फूट गया था देख उसके हम्म पहले. आई थिंक दैट वाज रियली वो स्लो मोशन। गुड फिल्म मेकिंग. आई यप. आई गेस वही वही किया उसने, क्या किया वाला क्या, he built up the film till that कि it would be a cathartic event, the end वाला, हम्म. तो people would meditate on the whole film, and then the Rishi Muni turning into a, he एरप्शन wanted, ऑफ एन he वोल्केनो वैसा. he wanted that, तो उसके लिए he made the whole film that way आई कि एग्री. things were very low mellow and अचानक से बढ़ता है, तो he wanted that impact, I think he was going for that, and it worked kind of, but then only एंड ऑल्सो it इट टेस्ट योर पेशेंस होता है ना, वो तेरे को पुश big time, करता रहता है एज तक. big time. लैग नहीं बोल रहा हूँ, बट देन एवरी सीक्वेंस, मतलब Hmm. और कितना होपलेसनेस बता रहा है, और कुछ नहीं. What happened was ये फिल्म का I guess जो promos थे that were released very long ago, I watched those things, marketing wise they were very poetic and visually and even dialogue And I wise mean, I felt part A was very poetic. था। पार्ट 2 तो उससे ज्यादा लगा मेरे को, इनफैक्ट वो ए से ज्यादा। अरे पार्ट टू तो इज रियली मेटाफोरिकली भी काफी तो हैवी था. ए में क्या हुआ था कि हाँ आई एक्सपेक्टेड अ लॉट ऑफ पोएट, आई थॉट वो मेटाफर्स जो है एंड एवरीथिंग इट वुड बी यूज्ड कि म्यूटेड था काफी. हाँ काफी म्यूटेड था एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द मेजर इवेंट, वो मेरे को अरे लग रहा था। सी, आई थिंक यहाँ पे ये कुछ नहीं हो रहा है, मैंने उसके थ्रू ही ना, आई थिंक आई
started to feel more about those characters. I started to feel more empathetic or sympathetic towards them as and when movie went ahead. मेरे को एंडिंग लाइक वो फोन कॉल में genuinely बुरा लग रहा था for Mm, Rakshit's character. It added a certain depth, like वो character exploration हो या उनका mhm, relationship exploration, mhm, and also like जब flashback में दिखा था ना, mhm. लाइक इन दोनों का रिलेशनशिप, हम लोग सिर्फ वो हैप्पी पार्ट ही देखते हैं, लाइक खुशी Like वाला। he remembers, yep. आई थिंक वो पुल कर रहा है अपने को अंदर, ये सब कि हाँ लाइक But also it tests our नहीं, patience by doing that. वो तो है, वो तो है, वो तो है, और क्या था कि दैट आई the एग्री। scenes are, if you put in like really fresh scenes, yeah, it is dealt in a certain way, and if you are providing some visual word in it, so I'm okay with staying on scenes on still cameras for 10 minutes, whatever time you tell me. But हाँ if हाँ nothing is, things are normal, ki I've seen this before, and you are हाँ, making me watch it पर तेरा for a भाई long time. बार बार साले So so हर बार कुछ नया देखता रहता है, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स पॉसिबल विद एवरी मूवी, बिकॉज समटाइम्स लाइक चीता hmm, भी देखेगा ना, हाँ, लाइक ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म नहीं मेकिंग है नहीं उसमें करता। कुछ नहीं है, हाँ। उसमें भी बहुत लंबे लंबे स्टेज है सीन के बीच में, नथिंग इज हैपनिंग, ही इज नॉट गेटिंग एनी क्लू अबाउट द किड, तो उसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉज इन बिटवीन, नथिंग इज हैपनिंग इन बिटवीन, बट आई वाज ओके विद दैट बिकॉज ही गेव मी अ सर्टेन इमोशन टू स्टे विद, तो आई कैन फील द टेंशन विद हिम। बट इन दिस आई वाज, क्या बोलते हैं, लिटिल डिटैच्ड, कि हाँ, द सीन हैपेंड, द इमोशन वेंट विद द सीन, दैट इज द डिफरेंस आई वाज टेलिंग, कि आई एम ओके विद staying only unless and until you give me an emotion. और एक भी था कि आई नो इट्स लाइक डिवाइडेड इन पार्ट वन Mm-hmm. एंड पार्ट टू, बट ना पार्ट ए भी जो भी है अपने देखा साइड है, व्हेन आई गॉट आउट ऑफ द थिएटर ना, मेरे को ऐसा एक सेंस ऑफ एक लॉन्गिंग, मतलब कुछ तो Mm-hmm. अधूरा है ऐसा लगा मेरे को। Part B. हम्म, अभी मैं जब रिमेनिस करूंगा मूवी के बारे Mm-hmm. में Mm-hmm. साइड ए को, Mm-hmm. आई जस्ट थिंक अबाउट इट इन वो तीन मेजर सीन्स ही है, अगर तू याद करेगा तो। Mm-hmm. बाकी सब सीन्स जस्ट फिलर सीन्स है टू ऐड डेप्थ True. टू दैट Exactly. रिलेशनशिप, वही है सीन। If बट या if इट वाज you गुड मैन, if you s- म्यूजिक म्यूजिक हाँ, music म्यूजिक भी was good. काफी हाँ. अच्छा था। If you see the starting of the 20 minutes and everything where they're building the character, he's going to watch, see the इट्स गुड भाई, houses and हाँ, अच्छा था वो, बहुत अच्छा था. मेरे को अच्छा And लगा। and it was not sold, but then from what I read, it was said कि it deals with the mundane relation of two people. I thought it would be more like Nagaraj, Manjule type. ठीक है, So I तेरा was, मराठी सिनेमा का प्यार मत लेकर इधर। so, which I didn't get. I wasn't disappointed, but then I was in the end getting impatient कि हाँ खत्म करो. समवेयर मैं समझ गया था कि ये वैसा ही मूवी होने वाला है। What one thing they achieved is they gave me a color for the film. Whenever I see side A, राइट, I see light blue or ब्लू, sky blue or color of the sea. ब्लू And when इन I see जनरल, side B, हाँ, when I ये see क्यों कर side रहा है B, भाई लाइट I वो। see red. हाँ, all the हाँ shades of blue. वो इट But वाज, whenever I see हाँ B, वेरी, I see red. वो तो बहुत अच्छे से उन्होंने डेवलप किया. Underlying thing which they developed it really well. So काफी even when अच्छा you था वो। say the name, you see the color. So that is a great achievement. ऐसा बोलेगा तो. द डिजाइन जो भी है, सेट हम्म डिजाइन हम्म हम्म काफी सेट सही था। डिजाइन तो इट वाज इन पार्ट बी. इफ यू इफ हाँ मोर पार्ट भी राइट। पार्ट बी ना, तूने रियलाइज किया उसका घर लड़की का. आई मीन पार्ट ए वाज आल्सो लाइक काफी ग्रिटी, मतलब थोड़ा वो हम्म. ग्रिटीनेस दिखा रहा था लाइक जेल। एंड हाँ हाँ, अरे पार्ट ए के बारे जेल में एक सीन्स वर बात गुड, बोलना हाँ. भूल गया, जेल सीन्स वर रियलिस्टिक एज फक भाई, काफी मेरे को काफी किसका अच्छे किसका याद जेल सीन थे। दिलाने लगा. देयर इज दिस शो क्रिमिनल जस्टिस करके जिसमें विक्रांत मैसी था, सीजन 1. राइट राइट, वो पोर्ट्रेल बहुत क्लोज लगा. तो टॉयलेट वाला एंड देन वाटर बंकर में जो, लीकिंग एंड एवरीथिंग, यप. या एवरीथिंग वाज रियली रियली, एंड वो सुसाइड काफी काफी अच्छा हैवी था. था। Even though आई those मीन scenes रियल, weren't that important to the main plot line of him trying to हाँ get the girl back, but एग्जैक्टली, then एडेड, हाँ वही उसका कि डर, उसका environment डर, क्या dangerous. हाँ लाइक उसके दिमाग पे बस गया था ना कि ओ Mm-hmm. फक, आई हैव टू गो थ्रू दिस लाइक फॉर अनदर, सो Few मतलब years, दैट yeah. मेनी इयर्स, हाँ वही अच्छा था। यार crazy था आई वो थिंक वी तो. नीड टू टॉक अबाउट, आई ना,